Hello dear. Basically, this is our first video of economics for the new section of 2023 and 24 students of class 10. In this video, as you can see in the thumbnail and the title, we are going to cover the chapter name development, the first chapter of economics. It is a very easy chapter. If you look at the NCERT, even I have the NCERT in my hand, the PDF of this chapter. It is a 16 pages chapter, but if you want to delete the many pages you can delete from this. Okay, like there are many pages which only diagrams are given. For example, the first page, it is for the teachers, so you can delete this one also. And if we delete this type of pages, remaining I guess 7-8 pages, or even there is only 6 pages that you have to learn. So it is one of the easiest, one of the smallest chapter you have to learn in class 10 CBSE board students. So let us begin this chapter, and I hope again this video will be beneficial to you. And thank you. We have reached the 5k subscriber on 27th March night 12:25, this time 4 minutes ago. Okay, so let's move ahead with your support. And now the chapter name development, let us begin this chapter. Let me first of all conclude this chapter in my own way. Okay, I have already told you that we will post 2 types of video. One will be of the overview type videos, the summary type videos, in which I will be using the English language, and in the second type of video, the lengthy one, the detailed one, in which I am going to speak in Hindi more to make you clear understanding, better understanding, for your better understanding. Okay, so covering the second video of our English, here in this chapter you have to learn, you have to understand that development is not only a single way of understanding. Okay, for many people goals may be different. For example, my goals are different from your goals. Okay, so this is a better understanding that you have to learn in this chapter. First of all, कि सबका डेवलपमेंट सेम नहीं होता, सबके लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है, सबका गोल्स अलग अलग होते हैं. कोई पैसे से तोलेगा, कोई अपना स्पिरिचुअल नीड से देखेगा, तो answer can be anything. So no one goal is similar. This is the first basic understanding from this chapter. Moving ahead, if you ask me, sir, where from we have to study or what we have to study in this chapter, the first and the most important term that you have to study in this chapter is per capita income or the average income. If you go to the page number, let me tell you, the page number is 8. Okay, 8th page number of this chapter, 8th page number of this chapter, where you can find the 2 terms, the alternative terms. You can say average income, or you can also say that per capita income. Both are same, it is just an alternative names. Okay, so what is average income? The answer is the total income of the country divided by its total population. एक देश का जो टोटल आबादी होता है, उसको वहाँ के टोटल इनकम को टोटल आबादी के साथ जब आप डिवाइड करोगे, तो जो आंसर आएगा उसे वो कहते हैं एवरेज इनकम और द पर कैपिटा इनकम. इसको हिंदी में कहते हैं प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है. आय मीन्स इनकम, प्रति व्यक्ति मतलब पर कैपिटा. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर इज द वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक रिपोर्ट. ओके, जस्ट बिलो द per capita income definition, you can find the last paragraph of the page number 8 is about the world development report. Okay, world development report is brought by the world bank. यूनाइटेड नेशन के अंदर यह उसका एक पार्ट है अपना वर्ल्ड बैंक, और इस वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट निकाला जाता है जिसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. अकॉर्डिंग टू दिस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, countries have been classified into many categories. For example, rich countries, or you can say developed countries, second developing country, third underdeveloped countries. Okay, so there are 3 types of countries: developed country, developing country, and underdeveloped country. Here India lies between, not between, it's just between the middle and the low. It is called, if I would like to tell you the right exact answer, the answer is given here. India comes in the category of low middle income countries. So India is neither middle nor low. We are neither totally poor nor totally middle. We are just between these 2 things. Okay, so this is the first understanding that you have to learn. And again, I would like to tell you one thing. This video is again shooted with the help of front camera. So I am not going to write anything in this board. You have to just understand that I am teaching you the first chapter of economics. Okay, so till present
time you got three things from this chapter. First, the meaning of development will be different for different people. So okay, this is the first thing. Second, the most important thing, the definition of per capita income. हर साल यही पूछा जाता है, तो you can believe me and totally, and अब बस ये पढ़ के जाओ, मतलब सबसे पहले per capita income का definition पढ़ के जाना है. थर्ड थिंग, वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक रिपोर्ट आपको पढ़ के जाना है, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है. ओके, द फोर्थ, एंड इट इज़ अ फैक्चुअल क्वेश्चन. यहाँ पर सीधा पूछ देगा कि इंडिया का इनकम कितना है, तो यहाँ दिया गया है प्लीज़ बाय द लेटेस्ट एनसीईआरटी. ओके, बिकॉज द फैक्चुअल आंसर विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट बुक्स. फॉर एग्जाम्पल, द PDF आई हैव, इन दिस PDF इट इज़ रिटन दैट द इंडियन इनकम इज़ $1530 पर एनम. अब अपने में देख लीजिए कि अपने में भी आपका यही लिखा हुआ है 1530, या कुछ और 1600 लिखा है कि 1700 लिखा है या 1200 लिखा है, एक बार देख लीजिएगा. ओके, देन द रिच कंट्रीज excluding countries of Middle East and the certain other small countries are generally called developed countries. Okay, जैसे कि rich countries को कहते हैं डेवलप्ड कंट्रीज, और जो मिडिल इनकम कंट्री है जो कि रिचर की ओर बढ़ रहा है उनको कहते हैं डेवलपिंग कंट्री. एंड जो अभी कुछ नहीं, फॉर एग्जांपल द पोरेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड पहले था, दैट इज कॉल्ड द साउथ सुडान. ओके, बट एट प्रेजेंट टाइम 2023 the poorest nation of the world is known as Burundi. It is the poorest nation in the world. The earliest capital was Jitega, but now I guess the capital was changed, something different name. And also I have learned some interesting word about them. It is that the peoples of Burundi were known as Abarundi, and the currency of this country is known as Umarundi. So this is it is like a funny way for us, but it is not so funny, I believe. Let me move towards forward and next page. Okay, you have to learn the per capita income and the World Development Bank report. This is the two first most important thing. In the next page, where you can find the heading in the page number 10. Okay, page number 10, there is nothing on in the page number 9. It's just a box which is not useful to you, not useful for you. Moving towards the page number 10, there is something important for you. For example, there is a table 1.4. There is a table in the page number 10 of this chapter, table 1.4. Here you can find three new terms. Okay, the first term is called IMR, infant mortality rate. What is called infant? Infant क्या होता है, तो जरा प्लीज सुनिएगा. When the baby is inside the mother womb, जब पेट में हो, गर्भपात्र में, तो that baby is known as fetus. Fetus कहलाता है. Whenever the baby comes out from the mother body and in the world, he is known as infant. Just newborn babies, of a few hours or few days were known as infant. After growing, then they will come to known as शोना बेबी, बच्चा जो भी है वो सब कहने लगते हैं. बट बिगिनिंग टाइम में जन्म होने के बाद दे आर नोन एज इन्फेंट. ओके, द पॉइंट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब कितने बच्चे हैं जो कि हज़ार बच्चों में कितने बच्चे हैं जो मर जाते हैं. इट इज़ नोन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. सपोज दैट देर इज ए children, there is a kid, there is a infant. Okay, and out of 1000, how many infant are dying? The reason of dying may be anything, maybe accident, maybe killing, murdering, anything. Okay, anything, any incident, anything can be the reason. If you have malnutrition, any kind of disease, anything. If the infant is dying out of 1000, how many infant are dying out of 1000 is known as infant mortality rate. And the same type of word, there is one more term, MMR, maternal mortality rate. दैट मीन्स सुने होंगे आप लोग, जब बच्चा जन्म देने टाइम बहुत लोग माँ मर जाती है कभी कभार. ओके, दैट इज कॉल्ड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट. मैटरनल मीन्स मदर, पैटर्नल मीन्स फादर. बच्चा जन्म होता है तो बात तो वैसे मरता नहीं है, तो देर इज नो पैटर्नल मोर्टेलिटी रेट, देर इज ओनली मैटरनल मोर्टेलिटी रेट. ओके, टेक मी सीरियसली, नॉट इन अ फनी वे. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टर्म, दैट इज कॉल्ड द लिटरेसी रेट. ओके, लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है? According to your NCERT, if a person is above the 7 year of age and if he can read and write, okay, अगर उसको बोलना और लिखना आता हो, for example पढ़ना और लिखना, जैसे कि suppose that if I say that I know how to write English and even I know how to speak in English, then I am a literate person, not educated, it's literate. Okay, there is a difference between literate and educated. Suppose that if I say that you know how to speak Bhojpuri, but you don't know how to write Bhojpuri. When you can't write Bhojpuri because there is देखो बोली जाती है भाषा बट लिखी जाती है लिपि, स्क्रिप्ट कहलाता है.
भोजपुरी का कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है, हिंदी का स्क्रिप्ट है. फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मी स्क्रिप्ट, आई थिंक यू मे बी हर्ड दैट. सॉरी, देवनागरी स्क्रिप्ट. ओके, द संस्कृत, इट ऑल्सो हैव ए स्क्रिप्ट. द मलयालम लैंग्वेज, एवरी लैंग्वेज हैज़ देयर स्क्रिप्ट. जब जब स्क्रिप्ट होगा तो वो लिखा भी जा सकता है, लेकिन भोजपुरी जो कि बिहार में बोली जाने वाली जो भाषा है, इसका कोई लिखने का कोई रिटन सोर्स है ही नहीं. सो इट इज़ नॉट ए लैंग्वेज एट ऑल. दैट्स वाई नीतीश कुमार द सीएम ऑफ बिहार, उन्होंने कई बार ये इसलिए बता रहे कि सेकेंड चैप्टर ऑफ सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस विच इज़ नेम्ड एज फेडरलिज्म, वहाँ पर आपको पढ़ना है अबाउट द लैंग्वेज पॉलिसी लिंग्विस्टिक स्टेट्स. सो दिस नॉलेज विल बी बेनिफिशियल देयर. तो हम इसलिए इंटरलिंक करके आपको बता रहे हैं. There were many times when the CM of Bihar, Nitish Kumar, tried to get Bhojpuri language, the scheduled language दर्जाहन, उसको शेड्यूल लैंग्वेज का दर्जा देने का बहुत बार ट्राई किया, बट दिस लैंग्वेज नेवर गेट एनी शेड्यूल लैंग्वेज recognition. Reason, because Bhojpuri can only be spoken, not can be written, can't be written. Okay, at the same time the Maithili language of Bihar, which belongs to Mithila region, the Madhubani region, Madhubani district of Bihar, Sitamarhi, Madhubani, Darbhanga, that language is a scheduled language. Okay, but Bhojpuri is not a scheduled language. I don't know why we are running behind this Bhojpuri. We have to learn this chapter. So moving towards this chapter, the first word of page number 10 is what? Infant mortality rate. I hope you have understand that. Second, the term is called the literacy rate. If a person is above the 7 year of age and if he can read and write any languages, he is known as a literate person. And the third word is known as net attendance ratio. What is called net attendance ratio? If a person is or a student is between the age of 14 और 15, मतलब जो 10th पास करके अगर 11th 12th का भी पढ़ाई कर रहा है, मतलब if he is not leaving his schooling, if he is continuing his schooling after the 10th, they are counted under the नेट अटेंडेंस रेशियो. जैसे नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, मान लो टोटल बिहार में या इंडिया में, बिहार में मान लो अभी 5 लाख स्टूडेंट्स 10 पढ़ के पास हुए. सपोज दैट बिहार बोर्ड से 5 लाख बच्चे पास हुए, लेकिन 11th में केवल 3 लाख बच्चों ने नाम लिखाया, तो इट विल बी द नेट अटेंडेंस रेशियो, द 3 lakhs. ओके, नॉट द 5 lakh. तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टर्म ऑल्सो. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, द पेज नंबर what? Page number 11. Okay, in the page number 11, if you ask me is there anything important, I will say that nothing more important, nothing special, but there are some few knowledgeable things. For example, the per capita income of every state is different. This is the basic knowledge that is given in the page number 12. Okay, खुद बताओ ना, क्या सारा स्टेट का इनकम सेम है? नो. फॉर एग्जाम्पल द पर कैपिटा इनकम ऑफ बिहार इज अप्रोक्सीमेटली 55,500 अप्रोक्स. ओके, मतलब बिहार के एक लोग सालाना जो कमाते हैं वो है 55,000, जब एट द सेम टाइम द पर कैपिटा इनकम ऑफ केरला इज मोर देन 3 लाख. सोच रहे हो, केरला के एक लोग ऑन एन एवरेज कितना कमा लेते हैं? ऑन एन एवरेज 3 लाख प्लस कमाते हैं, जबकि बिहार के लोग 55,000 कमाते हैं. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिटवीन केरला एंड बिहार. उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा एंड अपना स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल्स ऑफ बिहार का स्टैंडर्ड क्या होगा. ओके, एंड दिस इज रियलिटी. ये मत सोचना किसी को कम करके बता रहे, किसी को उठा चढ़ा के बता रहे, जो है सो वो है. आगे बढ़ते हैं. एंड अगेन महाराष्ट्र, हरियाणा, दिस आर सम ऑफ द प्लेसेस और द स्टेट्स वेयर द पर कैपिटा इनकम इज वेरी मच हाई व्हेन कंपेयर्ड टू द स्टेट्स लाइक बिहार एंड झारखंड. ओके, so this is the basic knowledge again given in the page number 12. Moving towards the next thing, there is an heading known as public facilities. Okay, for public facilities, in this topic you will learn about, let me read the first side of this page. आप खुद बताओ कि ये knowledgeable है या नहीं है, बस one paragraph पढ़ रहे हो. Okay, here you can learn that how is it that average person in Maharashtra has more income than the average person in Kerala but lags behind in these crucial areas. The reason is money in your pocket cannot buy all the goods and services that you need to live well, है ना. बेसिकली बोला जा रहा है भले ही महाराष्ट्र में इनकम ज़्यादा हो when compared to Kerala, but somewhere Keralites, जब मलयालीज आर वेरी मच ahead दैन द महाराष्ट्रियंस, है ना. कुछ चीज़ें बहुत आगे है. फॉर एग्जाम्पल लिटरेसी, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. तो आपको ये भी समझ आ सकता है कि मनी इन योर हैंड, आपके पॉकेट में, आपके जेब में कितना पैसा है ये मैटर नहीं करता, आप उसको यूटिलाइज किस तरह से कर रहे हैं ये भी मैटर करता है. इवन इन दिस सेम चैप्टर अगर हम 1-2 पेज और आगे बढ़ाए, 1-2 पेज क्या, जस्ट एक पेज बढ़ाते हैं, पेज नंबर 12. अब आ रहे हैं पेज नंबर 12 में. सॉरी, इतना देर में पेज नंबर 11 बोल रहे थे. पेज नंबर 12 में अगर आप आओगे, सबसे पहले एक छोटा सा कि यहाँ पर देख रहे हो एक डायग्राम होगा यहाँ पर, इसी डायग्राम के बगल वाला पढ़ रहे हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट.
जो हम लोग टर्म पढ़े थे पर कैपिटा इनकम, एंड आफ्टर दैट टर्म देयर इज द पेज नंबर 10, द 3 टर्म्स, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बस ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड आफ्टर दैट द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस. व्हाट इज द क्वेश्चन? They will directly ask you in the question paper, the teacher will ask you why Kerala is ahead of other states. क्यों केरला आगे है? There are 2 major reason, 2 basic reason that is given in your NCERT, and the reasons are, let me tell you the reasons. Here it is given, the adequate provisions of basic health and education facilities. Answer is this: health and education. They have invested more in the health sector and also in the education sector. That's why Kerala is ahead of other Indian states. Okay, so this is a reason. आपको ये भी पढ़ना था. एंड आफ्टर दिस देयर इज ए टर्म दैट इज गिवन इन द जस्ट लेफ्ट साइड, राइट साइड ऑफ दिस टॉपिक. ओके, अगर आप राइट साइड में एक वर्ड लिखा है दैट इज कॉल्ड द पीडीएस. क्लास 9 से आप पढ़ के आए हो. इन द क्लास 9 द लास्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स नेम्ड एज फूड सिक्योरिटी इन इंडिया. इन द फूड सिक्योरिटी चैप्टर you have learned about the word known as PDS. What is PDS? Public distribution system. The public distribution system is a way of management of food distribution in India done by the government of India. It has 2 main categories. One is called the buffer stock, जहाँ पर अनाजों को भंडार करके सरकार रखती है, and the second term is known as the राशन शॉप, है ना, फेयर शॉप, जहाँ पर ये राशन पहुँचाया जाता है और वहाँ से लोगों को जिसके पास राशन कार्ड होता है उनको कम दामों में सरकार जो है प्रोवाइड करती है फूड ग्रेन्स. फूड ग्रेन्स मीन्स बेसिकली राइस, वीट, मतलब पैडी, वीट और वाट, और द sugar cane or the kerosene. These are the basic things that are provided through the PDS system, public distribution system. तो वहाँ पर ये PDS भी better है when compared to other states in India. Okay, now moving towards the next few more pages. If you ask me anything else, there is important as the last most important term. Okay, there is now only 2 topics remaining in this chapter. I hope after covering these 2 topics, let me conclude all the topic together. The second last most important topic of this, the most important topic of this chapter and second last topic of this chapter. Okay, so ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है अब जो बोलने वाले हैं वो, और ओवरऑल देखा जाए तो सेकेंड लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं. द टॉपिक नेम इज नोन एज HDI इन द पेज नंबर 13. पेज नंबर 13 में आओगे, जो बॉक्स है ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है. बीइंग ए टीचर आई नो विच बॉक्स इज इंपॉर्टेंट, विच बॉक्स इज नॉट इंपॉर्टेंट. द पेज नंबर 13 एक बॉक्स है जिसका नाम है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. इट इज ए way of calculating the growth of the country, and it is done by UNDP, United Nation Development Program. Everything is given in this box. You can just go and learn it or see it. Okay, the UNDP, it is an international organization, United Nation Development Program. It releases a report every year, and the report name is HDI, Human Development Index. And in this report, the organization tells that which country is ahead or in number 1 position, number 2, number 3. In the past many years, India have been ranking approximately around 130. मतलब हम लोग कभी टॉप 100 में आए ही नहीं है. तो सोचो ना, आउट ऑफ 145 countries, India is always ranking 130 around. Okay, the point is HDI is calculated on the basis of 3 most important thing. कभी भी किसी भी देश का HDI जो है 3 बेसिक चीज़ों से नापा जाता है, and the 3 important things are what? First, the income of the nation, the per capita income or the living standard, you can say that. Okay, second, the health of the country, or you can say the life expectancy. Okay, life expectancy, जितना अच्छा हेल्थ रहेगा उतना ज़्यादा वो लंबे उम्र जिएंगे, तो life expectancy. Third, the literacy or the education. So these are the 3 most important term. Either देखो हम दो अल्टरनेटिव बताते जा रहे हैं. You can say income, per capita income, or the living standard. You can say second point, the word is known as health or the life expectancy. The third term is literacy or the healthcare, literacy or the education sector. If the 3 things are better, then the country ranking will be high, otherwise the country ranking will be low. India comes under the very low category, and this is the report. You have to learn this report. Okay, एग्जाम ये नहीं पूछेगा व्हाट इज HDI, पूछेगा डेफिनेशन ऑफ UNDP, डेफिनेशन ऑफ HDI, फुल फॉर्म ऑफ UNDP, फुल फॉर्म ऑफ HDI, एंड व्हाट आर द 3 पैरामीटर्स ऑफ HDI. HDI के 3 पैरामीटर्स क्या क्या है वो नाम आपसे पूछ सकते हैं. एंड आफ्टर दैट, even just below that box, there is another box in which it is given the ranking of India. India ranked 135 in the world. Okay, out of 177 countries, it is given here, so you can just go and learn this. Okay,
And the last topic of this chapter is known as the groundwater. Okay, I hope you have watched my video of resource and development. In that video I have already told you that there are two types of resources, namely a renewable source of resource and non-renewable source of resource. The renewable source of resources can be used again and again after a certain period of time. Groundwater is also an example of renewable source of resource. If we use it sustainably, मतलब सोच समझ के अगर ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो हम लोग आगे भी यूज़ कर सकते हैं. एंड ये टॉपिक बताते हुए आपका चैप्टर जो है यहाँ पर ख़त्म होता है. अब एक बार सबको एक साथ कंक्लूड करते हैं. कौन कौन सा वर्ड आपको पढ़ना है, बस वर्ड्स बताते चल रहे हैं. देयर इज़ नॉट मोर देन 10 क्वेश्चन इन फ्रॉम दिस चैप्टर. ओके, 10 सवाल भी इस चैप्टर से आपको पढ़ने लायक नहीं है. रिमेनिंग 5 to 6 क्वेश्चन ओनली. ओके, सो लेट मी टेल यू द क्वेश्चंस और द टॉपिक. द फर्स्ट इज कॉल्ड द per capita income. Second is the world development report, वर्ल्ड बैंक द्वारा जो रिलीज़ किया जाता है. इंडिया लो मिडिल इनकम कंट्री, आपको याद रखना, और कितना आता है वो भी याद रखिएगा, $1530 ओके पर एनम. थर्ड क्वेश्चन वाज अवर व्हाट एच वो दैट इज कॉल्ड द लिटरेसी रेट. द टर्म infant mortality rate. Next the term was that we learned, that is the HDI, the parameters, 3 parameters of HDI, and it is released by the UNDP. That topic was important. And last topic was the groundwater. It is a type of renewable source of energy. You have learned that word also. And there is a indirect question, Kerala, that was one of the most important question. Why Kerala is ahead of other states? That there were two main reasons. One was the basic education facility, and second is the medical education and the medical care. Okay, these are the two main reasons. And the last question from this chapter. Okay, so सबसे आखिरी सवाल क्या है सुनिएगा. इनडायरेक्ट सवाल है, कि स्टार्टिंग से ही है जहाँ पर डेवलपमेंट वाला टॉपिक था. ओके, सबसे स्टार्टिंग में पूछेगा, व्हाट वेर द फैक्टर्स दैट ए पर्सन विल लुक बिफोर ज्वाइनिंग ए कंपनी फार फ्रॉम देयर प्लेस. है ना, मान लो आपको कहीं नौकरी मिला तो आप नौकरी लेने से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखोगे. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल ऑल्सो आस्क इन द एग्जामिनेशन. विल द सैलरी ओनली मैटर और अदर फैसिलिटी विल ऑल्सो मैटर. फॉर एग्जाम्पल द एकोमोडेशन, रहने का जगह. फॉर एग्जाम्पल द बेसिक एमिनिटीज़ अवेलेबल इन द एरिया. है ना, क्या वहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटी आपको जो होना चाहिए क्या वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट काउ मिल्क एवरी डे बट देर इज़ नो काउ इन दैट एरिया, ओनली कैमल मिल्क इज़ अवेलेबल, विल यू गो टू वर्क देयर. तो इस तरह का सवाल. सपोज दैट यू आर गेटिंग ए जॉब, यू आर शाई टाइप ऑफ पर्सन. है ना, तुम थोड़ा शर्मीले मिजाज के आदमी हो, एंड यू गॉट ए जॉब वेयर देर इज़ ओनली फीमेल ladies, will you work there? It is a question mark. है ना. Suppose that you got a better job in a better place but there is no friend of you, you are totally alone, will you do work there? So these are the other criteria that matter, not only the money matter. At the same time, these are the different types of factors that also matter. It is given in the page number 2 or 3. Okay, एंड ये सब बता के आपका चैप्टर यहाँ पर एंड अप होता है. इट इज़ अराउंड 20 मिनट से ज़्यादा एक वीडियो है. आई एम नॉट टोटली स्पीकिंग हिंदी और इंग्लिश, इट इज़ लाइक एन इंग्लिश. ओके, है ना, लेकिन हाँ आई एम ट्राई टू स्पीक इंग्लिश मोर, बट वेन एवर आई फेल्ट दैट कि थोड़ा हिंदी में समझाना चाहिए, वहाँ पर हिंदी भी यूज़ कर रहे थे. That's all for this video. I hope it was knowledgeable to you, understandable to you, and that's all. So keep watching our videos and be updated regularly. Join our Telegram channel for notes and other purposes for class 10 CBSE board 2023 and 24 section. Thank you.